Okay. Yes, in the last lecture we have started the transaction serializability in DBMS. Okay. Yes. What is serial transaction, students? Who will tell? What is serial transactions? What is serial transactions? Yes, one answer is there. Sequence. Yes. One by one. Okay, good. Yes, Sarfraz. Okay. Serial transaction means transaction will be performed in sequence one by one. Okay. First of all, the first transaction will complete its all the executions. After then, next transaction will be allowed to perform the transaction on the same data. Okay. If there are multiple transactions want to access on the same data, then transaction will allow to access those data one by one. It's called the serializability. Okay, why we need this serializability? Why we need this serializability? Because to overcome the lost update problem. Okay, this is a lost update problem that we have learned in the last lecture. Okay, to overcome this problem or to find the solution for this problem, we have the serial transaction concept in DBMS. Okay, that we have covered in the last lecture. Okay, a grouping of transaction and defining the order of that transaction is called as scheduling. Okay, serialization मतलब क्या? Serial transaction मतलब क्या? The transaction will execute one by one, and the grouping of that transaction. Okay, grouping of that transaction and defining the order of the transaction known as scheduling. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Scheduling. We know the word scheduling. Okay, we have learned in detail about the scheduling word in the operating system. That is process scheduling था. Okay, that is process scheduling था. Now this is a transaction scheduling. Means we will decide the order of the transaction. Okay, we will decide the order of the transaction. The definition is given to you here. A schedule is a process of grouping the transaction into one and executing them in a predefined order. Okay, predefined order में execute करेंगे. Order is assigned. Okay. Okay. This is an example of scheduled transaction that already we have learned in the previous lecture. Transaction T1. After completing execution of transaction T1, the transaction T2 will start. Okay, execution. Same. First of all, ये T2 is given to chance, then T1 will do. Okay. Order कोई भी हो सकता है. ऐसे कि पहले T1 ही करेगा, then T2 no. Okay. कोई भी transaction करेगा, but first of all, let them transaction to complete its execution, and after that, the transaction next transaction will allow. Okay. There are two types of schedule. Okay, serializability. Depending on the type of schedules, there are two types of serializability. The first is conflict serializability and the second is view serializability. Okay, what is the meaning of conflict serializability? मतलब क्या? For example, there are two transactions. Okay, and in that two transactions, there are one instruction in both the transactions that should be right. Okay, for example, transaction T1 has right instruction, transaction T2 has also right instruction, and both the right instruction update the same data x. Okay, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन. कैसे बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन. ओके. Okay, suppose there are transaction T1 and T2 and I1 and I1 and I2 are the instruction. मतलब transaction T1 में all are the instructions. ये सारे क्या है? Instruction x equals to x minus 10, write x, y equals to y plus 100, write y. All are the instructions in the transaction T1. And in the transaction T2, these are the instructions: x equals to x minus 10, write x, z equals to z plus 100, write z. All are the instruction in the transaction T2. Okay, these are the instructions in the transaction T1. What is the definition? These two transactions are said to be conflict. Transaction T1 and transaction T2 are said to be conflict serializable if both the instruction access the data item D. Okay, both the instruction access the data item D and at least one of the instruction is right operations. दोनों एक ही data item को access करें और उसमें एक operation क्या होना चाहिए? Right operation होना चाहिए. That is a conflict transaction. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Conflict transaction. समझ में आया? ओके, व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन? कि दो ट्रांजैक्शन है उसमें एक ऑपरेशन क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए. ओके, राइट होना चाहिए, बट दोनों कॉमन डेटा को राइट होना, अपडेट करना करते होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हियर y equals to y plus 10, z equals to z plus 10, write y, write z, but write y and write z.
दोनों कॉमन को नहीं राइट करें, ओके, राइट एक्स एंड राइट एक्स, तो दोनों कॉमन डेटा एलिमेंट को ही एक्सेस करें, so that is a conflict serializable. Okay, suppose we have a transaction and what is non-conflict? Non-conflict मतलब क्या, we have a transaction as shown below. Here we do not have any node of instruction which can be who and made this transaction as non-conflict. For example, this is our transaction T1 है T2 है, okay, transaction T1 ने changes किया, उसके बाद transaction T2 उसको रीड कर रहा है, आफ्टर दैट द ट्रांजैक्शन T2 इज अपडेट दैट इंस्ट्रक्शन, देन अगेन ट्रांजैक्शन T1 उसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग को ये सीक्वेंस में भी है, वरना तो क्या हो गया, नॉन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है. द सेकंड टाइप इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ओके, द फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकंड इज व्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? के दोनों जो ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन में दोनों एक कॉमन इंस्ट्रक्शन जो है वो अपडेट करते होना चाहिए कॉमन एलिमेंट्स को. View searchability, this is similar to view. ये हमारा बाकी था, yesterday's lecture we left, okay, from these topics. Now today we will complete this view searchability. This is similar to view equivalent schedule. Okay, view searchability is equivalent to view, similar to view equivalence schedule. What is view equivalence schedule? Let's see. Here two session will have the same transaction. Okay, session, for example, session 1 inserting the data into student table and second session जो है वो old student table को update करा है. तो we can say कि there are two sessions. Session is nothing but the, you can say the transaction, you can say, okay, transaction उसको बोल सकते हो. One transaction जो है वो एक student data को अपडेट करा है, सेकंड ट्रांजैक्शन सेकंड स्टूडेंट टेबल कर रहा है. उन्होंने सेशन वर्ड यूज किया तो उतना उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं. सेशन मतलब ट्रांजैक्शन, यू कैन से कि एक एम्प्लॉय जो है वो उसका सेशन जो टाइम पे वो काम कर रहा है, ओके, द टाइम वो सेशन हो गया कि फॉर दिस सेशन. ओके, सेशन मतलब क्या, पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेशन. इफ ट्रांजैक्शन इज व्यू इक्विवेलेंट, ओके, ट्रांजैक्शन इज व्यू इक्विवेलेंट, then अगर कोई ट्रांजैक्शन व्यू इक्विवेलेंट है, मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यू इक्विवेलेंट? इफ ट्रांजैक्शन T1 in session S1 read the data D, then transaction T2 and should also read the data D. मतलब ट्रांजैक्शन T1 अगर रीड कर रहा है तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या, सेकंड सेशन में भी क्या करना चाहिए, रीड ही करना चाहिए. ओके, if T1 in S1 read the data D produced by another transaction T dash, then T2 in S2 should also read the data. मतलब एक सेशन जो है जो काम कर रहा है डेटाबेस पे, तो सेकंड सेशन भी वही काम करता होना चाहिए ऑन द सेकंड डेटाबेस. ओके, so that is called the equivalent, view equivalent. Okay, view equivalent. How to create view, you know. Okay, with example हम लोग देखते हैं, नीचे example है, then you will get the idea कि क्या बोल रही है लोग. ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ओके, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कभी होगा जब वो ट्रांजैक्शन व्यू इक्विवेलेंट होगा. ओके, जब वो ट्रांजैक्शन व्यू इक्विवेलेंट होगा तभी. तो व्हाट इज व्यू इक्विवेलेंट, हम लोग एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन करते हूँ. मैं आपको ऊपर जो बताया वही चीज है, बट इन दी एग्जांपल फॉर्म में है, तो आपको समझ में आएगा. Two schedule S1 and S2 are said to be view equivalent if both satisfy the following condition. कोई ट्रांजैक्शन जो है वो व्यू इक्विवेलेंट कभी होगा जब ये फॉलोइंग कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा तभी. फॉर एग्जांपल देयर आर टू शेड्यूल S1 एंड S2, दो शेड्यूल है. ठीक है, दोनों शेड्यूल में ट्रांजैक्शन है. ओके, दोनों शेड्यूल्स में क्या है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है. ये दोनों शेड्यूल, दिस इज फर्स्ट शेड्यूल, दिस इज सेकंड शेड्यूल. ओके, तो जो शेड्यूलिंग है, जो शेड्यूल किया है ट्रांजैक्शंस, उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए. ओके, व्हेन दिस टू शेड्यूल्स आर सेड टू बी व्यू इक्विवेलेंट, so the what is the first condition? The first is initial read condition. The first is initial read condition. An initial read of the data item in both the schedule must be same. Okay, दोनों शेड्यूल में इनिशियल रीड जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल लेट टू शेड्यूल S1 is a one schedule, S2 is a second schedule. If transaction T1 reads the data item A in schedule S1, then in schedule S2 the transaction T1 also read the X. समझ में आया? The first condition क्या है? फॉर एग्जाम्पल दो शेड्यूल है, S1 शेड्यूल है, S2 शेड्यूल है. ओके, दोनों शेड्यूल है, दोनों शेड्यूल में सपोज टू ट्रांजैक्शंस है. फॉर एग्जांपल दिया है टू ट्रांजैक्शन है. अगर फर्स्ट शेड्यूल में
ओके, फर्स्ट शेड्यूल में इफ ट्रांजैक्शन T1 जो है, ओके, ट्रांजैक्शन T1 अगर डेटा आइटम को एक्सेस कर रहा है, रीड कर रहा है, तो सेकंड शेड्यूल में भी ट्रांजैक्शन T1 क्या होना चाहिए, रीड ही होना चाहिए. दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन. ओके, an initial read of the data item in both the schedule must be same. इनिशियल रीड दोनों शेड्यूल में दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो रीड ही करना चाहिए. इनिशियल रीड ऑफ द इनिशियल डेटा आइटम, एक ही डेटाबेस को दोनों रीड करते होना चाहिए, दोनों का फर्स्ट ट्रांजैक्शन. फॉर व्हाट, इसके लिए इक्विवेलेंट, व्यू इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है, व्यू इक्विवेलेंट के लिए. ओके, about to schedule S1 and S2, about to schedule S1 and S2 are view equivalent. ये दोनों शेड्यूल जो है S1 and S2 क्या है, equivalent है, because initial reading instruction in S1, okay, initial read instruction in S1 is done by T1 and in schedule S2 में भी है, it is done by the transaction T2. okay, clear? तो दोनों का जो रीड ऑपरेशन जो है वो सेम होना चाहिए. क्लियर? यस. अपडेट रीड सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, अपडेट रीड. ओके, सेकंड इज कॉल्ड, सेकंड कंडीशन इज द अपडेट रीड. इन शेड्यूल S1, in schedule S1 if the transaction TI is reading the data item A, okay, which is updated by the transaction TJ, then it is schedule. Then in schedule S2 also TI should be read data item A which is updated by TI. In short, for example, in schedule 1 में, okay, in schedule 1, in schedule S1 में ट्रांजैक्शन T1 राइट करा है और उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 उसको रीड करा है, तो सेकंड शेड्यूल में भी सेम थिंग होना चाहिए. ये ट्रांजैक्शन T1 जो है वो पहले राइट करेगा एंड जो उसने अपडेट किया वो ट्रांजैक्शन T2 उसको रीड करेगा. तो दिस इज द सेकंड कंडीशन, अपडेट रीड. इन शॉर्ट, व्यू इक्विवेलेंट मतलब क्या है, दोनों सेशन या फिर दोनों शेड्यूल जो है वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए. रीड करा तो दोनों सेम डेटा टाइप को रीड करते होना चाहिए, राइट करा तो दोनों सेम डेटा टाइप को राइट करते होना चाहिए. ओके, अबाउट टू शेड्यूल S1 and S2 are the view equivalent because in schedule S1 transaction T2 read the data item A which is updated by T1 and second schedule में भी same thing हो रहा है. ओके, सेकंड में भी सेम थिंग हो रहा है, so that is the update read. All these three conditions are for equivalent view. ये equivalent view के लिए. ओके, कभी भी कोई शेड्यूल इक्विवेलेंट कभी होगा, कोई इक्विवेलेंट कभी होगा जब ये कंडीशन परफॉर्म होगा तभी. ओके, यस स्टूडेंट, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है बिकॉज इन आवर बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. ओके, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो. ओके, कंस्ट्रक्शन का है हमारे बिल्डिंग में, तो वो आवाज शायद आपको आ रही होगी. ओके, the third condition is final right condition. okay, the third condition is final right condition. first हमने देखा रीड, इनिशियल रीड, दोनों शेड्यूल में दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो सेम रीड करता, एक ही डेटा आइटम को रीड करता होना चाहिए, उनका इनिशियल रीड सेम होना चाहिए. सेकंड, अपडेट रीड. ओके, मतलब अगर राइट के बाद अपडेट रीड कर रहा है तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी सेम थिंग होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज फाइनल राइट. The final write operation on each data item in both the schedule must be same. Okay, the final write operation, the final write operation जो है वो दोनों शेड्यूल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. शेड्यूल S1 if transaction T1 update the data items A at last, then schedule S2 the final write operation should also be done by T1 in transaction C. Okay, शेड्यूल S1 में अगर फाइनल राइट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन T1 करे तो सेकंड शेड्यूल में भी क्या होना चाहिए, देखो जो ट्रांजैक्शन T1 ही क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए. मतलब इन शॉर्ट दोनों ट्रांजैक्शन में सारी चीजें जो भी ऑपरेशंस है रीड एंड राइट सेम सीक्वेंस में होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द व्यू इक्विवेलेंट. एंड इफ द ट्रांजैक्शंस आर व्यू इक्विवेलेंट तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अ व्यू सीरियलाइजेबल. इफ शेड्यूल इज सेड टू बी व्यू सीरियलाइजेबल, if that schedule is view equivalent to schedule serial. okay, तो कोई ट्रांजैक्शन view serial कब होगा, जब वो view equivalent होगा तभी. and when the transaction view equivalent कब होगा, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो. and according to these three condition के जो दोनों शेड्यूल है वो सेम सीक्वेंस एंड सेम डेटा आइटम को क्या करता होना चाहिए, एक्सेस करता होना चाहिए. ओके, दिस आर द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ओके, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू, ये दोनों सीरियलाइजेबिलिटी जो है दैट इज अ टाइप ऑफ
serializability depending on the schedules. Okay, theory है students. Let's आपको ये थोड़ा सा उसको याद रखना ही पड़ेगा. You know, this is a complex है, इतना easily आप understand नहीं कर पा रहे हो. Okay, but when you will read now, तो you will get idea. आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा. You have to read. Okay, आपको उसको read करना ही है. Otherwise ऊपर से जाएगा. ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स आर वेरी इजी. ओके, इन डीबीएमएस प्रैक्टिकल्स आर वेरी इजी. कमांड्स जो है वो इजी इंटरेस्टिंग भी है, बट थियरी जो है वो थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का मेनली. बट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, यू हैव टू रीड ऑल दिस थियरी. ओके, इसको रीड करो. आई विल प्रोवाइड दिस मटेरियल्स. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज दैट इज database recovery. The next is data backup and recovery in DBMS. Okay, data backup and recovery in DBMS. Okay, so these are the basic है. पहले तो storage structure. You know what is the storage structure? Volatile memory, non-volatile memory, stable memory. We have already done in the operating system. Okay, the storage structure is a memory structure in the system. It is mainly divided in two categories. Okay, yes student, what is volatile memory and what is non-volatile memory? These two forms you know. Okay, बताओ मुझे, what is volatile and what is non-volatile memory? कौन बताएगा मुझे? What is volatile and what is non-volatile? बेसिक्स है ये इसमें कुछ नहीं है. दिस इज इजी टॉपिक. ओके, बट उसको रिकवर कैसे करना है ट्रांजैक्शन, दैट लॉग बेस्ड ट्रांजैक्शन है, दैट वी विल सी, बट दिस इज अ बेसिक. यस, व्हाट इज वॉलेटाइल एंड व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टूडेंट्स? हेलो मैम. हाँ बोलो सरफराज. मैम, वॉलेटाइल मेमोरी में हम लोग कुछ उसमें डाटा कुछ एंट्री कर रहे हैं मैम, उसमें से हमारा डाटा उड़ गया तो मैम वो वॉलेटाइल है ना? नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मीन्स हम कोई डाटा पुट करे और वो कहीं ना जाए, जहाँ पुट करे तो वहीं पर ही रहे. ओके, गिव दी सम एग्जांपल. एग्जांपल दे सकते हो मुझे वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के लिए? volatile memory, non-volatile memory के लिए give example, one example. Which is a volatile memory, which is non-volatile? मैम, वॉलेटाइल मेमोरी के लिए प्राइमरी मेमोरी. Yes, very good. And non-volatile? सेकेंडरी मेमोरी. Okay, non-volatile, yes, very good Sarfraz. Ishad ने आंसर दिया है. Non-volatile substance refer to a substance that does not readily evaporate into a gas under existing conditions. Yes, Ishad, बहुत hi-fi definition आपने बोला है. Can you explain this, Ishad? Ishad, please explain this. Yes, yes, Ishad. बैकग्राउंड में वॉइस. ओके, बट ये जो आपने डेफिनेशन दिया है, दैट इज रिलेटेड टू आवर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी. ओके, आई विल एक्सप्लेन. volatile memory means क्या? The data. Okay, if we are storing the data in volatile memory, the data will be lost if the power will be off. Okay, if our system will be off, then the data जो है, the data will be lost. It is a volatile memory. And in non-volatile memory, we can store our data permanently. Okay, primary memory is a volatile memory. Okay, why? What is the primary memory? Which data will be stored in primary memory? The system currently जो execute कर रहा है, ठीक है, system currently जो execute कर रहा है, CPU programs which are executed by this CPU are stored in the volatile memory. Okay, CPU जो programs execute कर रहा है उसको हम लोग कहाँ पे store करते हैं? volatile main memory में store करते हैं. Okay, and when we close that memory, ठीक है, हम लोग वो program या तो close कर देंगे तो memory में से क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा. ठीक है, for example now I am taking the lectures on Zoom.
ओके, तो मेमोरी में क्या स्टोर है, जूम. नाउ आई एम एक्सेसिंग दिस डेटा. कौन सा डेटा मैं एक्सेस कर रही हूँ, वर्ड फाइल में एक्सेस कर रही हूँ. तो अभी करंटली सीपीयू क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, जूम एंड ये वर्ड फाइल. तो जूम एंड दिस वर्ड फाइल, ओके, जूम एंड दिस वर्ड फाइल आर एग्जीक्यूटिंग बाय दिस सीपीयू. तो सीपीयू एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, पहले तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, मेन मेमोरी में. ओके, मेरा जो ये वर्ड फाइल है दैट इज स्टोर्ड इन दी, कोई तो डी ड्राइव में मैंने स्टोर किया, दैट इज सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर है, बट उसको मैंने अभी ओपन किया है. आई वांट टू रीड, आई वांट टू ओपन दिस फाइल, मैंने उसको ओपन किया है. तो अभी सीपीयू कौन सा एग्जीक्यूट करा है, वर्ड फाइल. तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेकेंडरी डिवाइस में से दिस फाइल इज ट्रांसफर्ड इनटू दी मेन मेमोरी. तो अभी मेन मेमोरी में जूम है एंड ये वर्ड फाइल ओपन है. ओके, अगर इफ सपोज कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से पावर ऑफ हो गया या तो कुछ क्लोज किया मैंने, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेमोरी में से निकल जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अचानक से लाइट चला गया तो क्या हो जाएगा, ये मेन मेमोरी में से निकल जाएगा. ओके, तो मेन मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी. ओके, which data will be stored in main memory, जो सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. हाँ, अगर लाइट चला गया तो अभी आपके सामने से ये जो वर्ड फाइल है वो एग्जिट हो जाएगा, जूम भी एग्जिट हो जाएगा. बट ये जो जूम जो है दैट इज इंस्टॉल्ड इन सी ड्राइव. तो सी ड्राइव परमानेंट ड्राइव में स्टोर है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर है. ये जो मेरा वर्ड फाइल जो है दैट इज स्टोर्ड इन डी ड्राइव. ओके, तो वो वहां पे रहेगा परमानेंटली. व्हाई, बिकॉज दैट इज अ नॉन वोलेटाइल. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल and non-volatile memory. Okay, we have already learned in detail in the operating system subject. Okay, so I think no need to repeat again all these things. So just I am reading this. Listen. Volatile memory, these are the primary memory device in the system and are placed along with the CPU. Okay, these memories can store only small amount of data, but they are very fast. For example, main memory, cache memory. Okay, this memory cannot endure the system crashes. Okay, means data in these memories will be lost on failure. Okay, non-volatile memory, these are the secondary memories and are used in size but slow in processing. Flash memory, hard disks, magnetic tapes, okay, your pen drive, DVD, all are the non-volatile memory. These memories are designed to withstand system crashes. अगर आपका system crash भी हो रहा है तो आपका data जो आपने store किया था in non-volatile memory that will be persist there. Okay, अगर आप उसको खुद डिलीट नहीं करते तब तक आपका डेटा वहां पे स्टोर होगा. ठीक है, and the third one is the stable memory. Okay, stable memory, this is said to be third form of memory structure, but it is the same as non-volatile memory. In this case, this copies of same non-volatile memories are stored at different places. Okay, हमने ये different places में store किया था. RAID RAID disk में हमने देखा था. ठीक है, RAID RAID concept देखा ना हमने, different levels थे in operating system में. We have learned about the RAID, that is called the stable memory. Okay, in this case क्या करते हैं हम लोग, RAID में सेम जो हमारा डेटा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है उसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बना के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में वी हैव स्टोर्ड. ओके, दिस इज बिकॉज in case of any crash and data loss, data can be recovered from other copies. That is a stable memory. So these are the three types of memory, volatile and non-volatile. We have already learned. Stable is मतलब क्या, ये we can store the copies of some same non-volatile memories on the different places. Okay, डेटा बैकअप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकअप. बैकअप मतलब क्या, कोई डेटा जो है उसका बैकअप लेके रखना फॉर द सेफ्टी. ओके, सेफर फॉर सेफर साइड वी विल टेक द बैकअप. हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैकअप लेके रखो. अगर कोई सिस्टम फेल हो गया या तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, तो हमारा जो डेटा स्टोर किया हुआ दैट सिस्टम में वो कहाँ पे जाना नहीं चाहिए. ओके, अगर प्रॉब्लम हो भी गया तो हमने बैकअप लेके रखा है तो वी कैन अगेन रिकवर फ्रॉम दैट बैकअप. ओके, इन अ कंप्यूटर सिस्टम we have primary and secondary memory storage. We know primary storage device RAM is volatile, that also we know. In it store all the recent transaction and result too when a query is fired, ये भी हमको पता है. Okay, all the data in primary memory is lost and we cannot recover the database. Okay, for example अगर हम database में काम कर रहे हैं, okay, okay, चलो, if we are working on the database, ठीक है, अभी हम लोग करंटली डेटाबेस पे काम कर रहे हैं. ठीक है, मैंने और डेटाबेस ओपन किया होगा, उसको मैंने सेव नहीं किया है, लाइट ऑफ हो गया वगैरह, तो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा. तो वी हैव टू बैकअप दैट डेटाबेस. ओके, डेटाबेस का क्या करना पड़ेगा, बैकअप लेके रखना पड़ेगा. ठीक है,
In such cases, we can follow any one of the following steps so that in the primary memory are not lost. Okay, we can create a copy of primary memory in the database with all the logs and buffers, okay, and are copied periodically in database. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस अब करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है बाय द मेमोरी, एट द टाइम हम लोग क्या करेंगे, वो डेटाबेस का जो डेटा है हम लोग लॉग्स में स्टोर करेंगे, कहाँ पे, लॉग्स और बफर्स, ओके, एंड लॉग्स एंड बफर्स में स्टोर करके उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे, ओके, एंड आर कॉपीज पीरियडिकली इनटू द डेटाबेस, उसको टाइम टू टाइम, 1 वीक या तो एंड ऑफ द डे, या तो वीक में एक बार, या तो मंथली, जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है फॉर व्हाट्सएप बैकअप के लिए, है ना, यू आर यूजिंग द व्हाट्सएप इन योर मोबाइल, तो टाइम टू टाइम आता है कि सेट योर बैकअप टाइम, कि आपको 2 वीक्स में एक बार बैकअप लेना है, मंथ में एक बार, या तो 15 डेज है तो डे वाइज भी कितने बजे आपको बैकअप लेना है, तो यू कैन सेट द टाइम, ऑटोमेटिकली वो टाइम पे बैकअप क्या हो जाएगा, बैकअप आपका व्हाट्सएप का इट विल बी स्टोर, ओके, एक बार आपने टाइमिंग सेट किया ऑटोमेटिकली बैकअप क्या हो जाता है, आपके व्हाट्सएप पर हो जाता है, ठीक है, इन योर सिस्टम। तो सेम थिंग विल बी हैपन इन डेटाबेस केसेस, ओके, तो आप उसको डेटाबेस का बैकअप अगर सेटिंग्स कर लेते हो तो यू कैन स्टोर योर डेटाबेस डेटा, ओके, पीरियडिकली मतलब क्या, टाइम टू टाइम, जो टाइम आपने सेट किया था वो टाइम पे। So in case of any failure, we will not lose all the data. Okay, we can recover the data till the point it is last copied to the database. Okay, and second is that we can have the checkpoints. The first option क्या है कि जो भी डेटा है वो हम लोग लॉग्स एंड बफर में स्टोर कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, we can have the checkpoints. Okay, checkpoints created at the several places so that the data is copied to the database. We will set the checkpoints. Okay, for example हमने 10 queries किया है, ठीक है, तो 10 queries के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक पॉइंट वहाँ पे सेव कर देंगे, चेक पॉइंट्स के लिए हम लोग विल राइट द क्वेरी, तो हमने चेक पॉइंट्स के लिए क्वेरी लिखा है तो जितना भी क्वेरीज के बाद हम लोग चेक पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, चेक पॉइंट्स क्रिएट करें, उतना सारा क्वेरीज का डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ओके, डेटाबेस में वो स्टोर हो जाएगा। तो दिस वन थिंग कैन डू कि हम लोग चेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके, सपोज द सेकेंडरी मेमोरी इटसेल्फ क्रैशेस, व्हाट हैपेंड टू द डेटा स्टोर्ड इन इट, ओके, ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी के लिए। The secondary memory crash हो रहा है तो what we can do, तो all data are lost and we cannot recover, अगर secondary device storage जो है non volatile memory का data जो lost हो रहा है तो क्या, so we have to think of some alternative solution for this because we cannot afford for loss of data in use database, okay, so there are three methods used to back up the data in secondary memory so that it can be recovered if there is any failure, okay, अगर primary memory थ्रू डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, ओके, मतलब अभी हम लोग करंटली डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल ओपन किया, ठीक है, उसमें मैं क्वेरीज वगैरह लिख रही हूँ, तो उसमें मुझे कुछ सेव करके रखना, तो वी हैव टू वेज एक लॉग ऑफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग एंड चेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट जो जहाँ पे हमारा डेटाबेस स्टोर्ड है, ठीक है, फिजिकल डिवाइस में सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, उसमें से मेरा डेटा डिलीट हो गया तो उसको हम लोग कैसे बैकअप कर सकते हैं, ठीक है, तो देयर आर वेज है, methods है, three methods है, the first is remote backup, okay, the first is remote backup, the database copy is created and stored in the remote network. What is the meaning of remote, what is the meaning of remote, you will tell, remote का मतलब क्या है, what is the meaning of remote, remote मतलब क्या, this is a common words ना हम यूज करते हैं, remote backup, yes, these are the common terms, remote backup, remote मतलब क्या, who will tell, yes, one answer is there, yes, getting access by another device, very good, okay, Kitari, getting access by another device, remote backup, another network you can say, or another device पे, okay, another device से you can access, तो क्या हो गया, remote backup, तो database copy is created and stored in the remote network, okay, तो one method is क्या है कि हम लोग डेटाबेस कॉपी जो डेटाबेस पे जो काम करे उसका हम लोग कॉपी बना के उसको रिमोट नेटवर्क पे स्टोर करेंगे, एंड दिस डेटाबेस, ये जो डेटाबेस है periodically updated with the current database so that it can be
so that it will be synchronized with the data and other details. Okay, student, 1 minute.